चारों तरफों और कठेड़ा सब पर 64 थंभों के बीच में गिलम बिछाई भर कर। कहूँ 64 थंभों का बेवरा, 4 धात बारे नंग, बने चारों तरफों जुदे जुदे, भाई सोले जिन सो रंग। चारों तरफों एक एक रंग के, तैसी तरफों 4, नए नए रंग एक दूजे संग, चारों तरफों 64 सुमार। ये 4 नाम कहे धात के, हेम कंचन चांदी नूर। ये 4 रंग का बेवरा, लिए खड़े जहूर। और 12 जवेरों का बेवरा, 5 पाने हीरे पुखराज, मानिक मोती गोमादिक, रहे पिरोजे विराज। नीलवी और लसनिया और परवाली लाल, और रंग कपूरिया, ये रंग बारे इन मिसाल। 4 द्वार 4 रंग के, 8 थंब भये जो इन, 5 मानिक और नीलवी, द्वार पुखराज चौथा रोशन। और थंब 2 5 के, 2 तरफों नीलवी संग, द्वार नीलवी संग 2 5 के, करे साम सामी जंग। 2 थंब द्वार मानिक के, 2 पुखराज 3 पास। 2 थंब द्वार पुखराज के, तासंग मानिक करे प्रकाश। थंब बारे भये इन विध, साम सामी एक एक, यो बारे बने साम सामी। धनी धाम धनी कहे, धाम धनी धाम धनी धाम धनी कहे। जे विध रखे धनी ते कहे, जे विध रखे धनी ते विध रहे। पिरोजा और कपूरिया, या के द्वार से बने हर रंग 4 4 सोए। ये 16 थंभों का बेवरा। आज नौतनपुरी धाम की स्थापना के अवसर पर और 12,000 पारायण, यहाँ पारायण के स्थल मूल मेलावा खंड में प्रतिवर्ष अनेक सुंदर साथ इस अवसर पर होते हैं, किंतु इस बार परिस्थिति थोड़ी सी विषम है। इसके कारण हमने किसी भी सुंदर साथ को आने के लिए नहीं बोला था,
कि सब लोग लाइव देख रहे हैं। हम लोग मंदिर से 20-25 लोग आएंगे, फिर भी कुछ सुंदर साथ अपने हिसाब से पहुंच गए। आप सबकी भावना है शांत चित्त रखें और आप अपने व्यवसाय में खूब आगे बढ़े। परिवार आप सबका सुखी रहे और આદુ સોંઠ આવી વસ્તુઓનું સેવન કરીએ તો એનાથી ઇમ્યુન શક્તિ વધે। થોડું પ્રાણાયામ કરી શકાય, થોડું આસન વગેરે કરી શકાય તો એ ખૂબ સારું રહે। ઘણા બધા ઉપાયો છે જેનાથી રોગ પ્રતિકારાત્મક શક્તિને વધારી શકાય। બાકી માત્ર દવાનો ભરોસો રાખીશું, વેક્સિન આવશે એનો ભરોસો રાખીશું તો ક્યાં સુધી આપણા સુધી પહોંચશે એ અત્યારે કહી શકાય નહીં। અને એ બધી વસ્તુઓ છે એમ તો શરીરની શક્તિને, રોગ પ્રતિકારાત્મક શક્તિને વધારવા માટે એમ જ કહેવામાં આવે છે। અને આપણે પ્રાકૃતિક રીતે આ શક્તિને વધારીશું તો વાયરસ હોય કે બેક્ટેરિયા હોય એ બધા તો આપણે સાથે જ રહેવાના છે અને એની સાથે જ જીવતા આપણે બધાએ શીખી જવું પડશે। તો આપણા મનને શુદ્ધ રાખીએ, વિચારોને શુદ્ધ રાખીએ, ખાનપાનને શુદ્ધ રાખીએ, रहन सहनને શુદ્ધ રાખીએ તો ખૂબ સારું રહેશે। તો આપ સૌ ખૂબ ખૂબ આગળ વધો। શ્રીરાજજી ની અપાર કૃપા આપ સૌ પર સદૈવ બની રહે એવી શુભકામના કરું છું। હવે આપણે સૌ પાઠ કરીશું। મહેર સાગરના પાઠ ખૂબ પ્રેમથી તો આપ બધા પાઠમાં સાથ આપજો। શ્રી અમારા સંત સ્વામી શ્રી ચેતનમણીજી પાઠ આરંભ કરશે। આપણે બધા સાથે પાઠ કરીશું। પ્રણામ। मेरे सागर होगी सुख समे हुक्म मेरे के हाथ में जो मेरे के सुख लेवात सुख दे तो सुखदायक कर साधन आवत कर दुख आए सुख आवत सो मेहर कोलत नजर इन दुख जिनी में बैठ के मेहर देखे दुख दूर कायम सुख जो हक के सो मेहर करत हजूर। मैं देखा दिल विचार के इस हक का हित इस मेहर से आया अव्वल मेहर है कित अपना इल्म जिन देता है सो भी मेहर से बेशक मेरे सब विद्यावत जित हुक्म जोश मेहर हक जाको लेत है मेहर में नहीं पहले मेहर बनावे वजूद गुनाहगारी दे मेहर की रूह मेहर खुमत माहे मेहर सिंहासन बैठ कर
रस प्रेम का काम पड़े न मेहर के, ये मेहर न हक मेहर होत जिन ऊपर ताए देत आत्मा थक, मेहर खेल बनाया वास्ते मेहर गोविंद, मेहर मिलाया हुआ और मेहर फिर मेरे रसूल हुए आया, मेरे हकली फुरकान कुंज लाए मेरे की करी, मेरे हक पहचान मेरे कुंजी इमाम को तीन मोहम्मद सूरत, मेहर दही कमत करी, मेहर जाहिर हकीकत, तो फुरकान मेहर खोलिया करी जाहिर मेरे आखरत, मेहर समझे मोमिन करे, मेहर जाहिर खिलवत, हे मेहर मोमिनों पर यही हासिल का शरूमत, कई मेहर हिस्सा समान को सो मेहर मुमिनों बरकत, मेहरे खेल से क्या मोमिनों, मेहरे आए तले कदम, मेहरे कामत करे के मेहरे हंस के मिले खसम, मेहर की बातें तो कहो जो मेहर को होवे पार, मेरे हक नियामत सब बाती, मेहर खुदा ही सुमार, जो मेहर ठाड़ी रहे तो मेहर मापे जान, मेहर पल पढ़े कोट गुनी सो, क्यों मेहर तेहर पापा। सागर आपका बिना हिसाब, ये मेहर को पार न वही जो कहे कोट करो पिता, लाल की सार्वजनिक जप भी करेंगे। श्री कृष्ण सच्चिदानंद पर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण सच्चिदानंद पर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, निजानंद स्वामी की, नाथ प्यारे की, सीता नौतनपुरी धाम की, जगत गुरु आचार्य श्री अक्षवाट श्री कृष्णमणि जी महाराज की। आइए आज यहाँ हम सब एकत्रित हुए हैं परब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा से पृथ्वी परिक्रमा के उद्देश्य और मूलतः
श्री 5 नवतंपुर धाम की स्थापना दिन। तो आइए वर्तमान सदगुरु के श्री चरण में निवेदन करता हूँ कि आप हम सबको आशीर्वचन प्रदान करें। महाराज श्री प्रणाम। आदरणीय संत वृंद तथा धर्मप्राण सुंदर साथी, माताएं, बहनें एवं भाइयों, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अपार अनुकंपा से हमें उनका ही दिया हुआ ज्ञान और उनका ही दिया हुआ मंत्र गुरु परंपरा से आज प्राप्त है। सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को विक्रम संवत 1678 को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिया और ज्ञान प्रदान किया, पाताल से परमधाम पर्यंत का अनुभव करवाया, दर्शन करवाए और फिर ब्रह्म आत्माओं को जागृत करने के लिए ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान के साथ साथ तारतम महामंत्र प्रदान किया, जिसका हम सभी ने अभी जप किया। सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को दर्शन तब हुए जब उन्होंने भौतिक वस्तुओं के प्रति मोह का परित्याग किया। भौतिक वस्तुओं को त्यागने की बात शास्त्रों में कहीं भी नहीं की है, किंतु भौतिक वस्तुओं के प्रति मोह होता है, मोह से आसक्ति होती है, बस उसको त्यागने की आवश्यकता है। तो आसक्ति त्याग देते हैं, मोह त्याग देते हैं, फिर अनावश्यक विषय सुख के प्रति हमारी रुचि नहीं होगी। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण तप है। सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने वैसे तो 40 वर्ष पर्यंत तप किया, उसमें भी नौतनपुरी धाम के आगमन के पश्चात उन्होंने 14 वर्ष पर्यंत एक निष्ठ तप किया। उसके पश्चात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने उनको दर्शन प्रदान किया। हम लोग इतना तप नहीं कर पाएंगे, आज की परिस्थिति अलग प्रकार की है, किंतु सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने जो ज्ञान दिया है उसको हम समझें, उसके महत्व को समझें और हमारे अपने अपने व्यवहार को करते हुए हमारा ध्यान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों में रहे। पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत, विश्व ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी है, तो उन्होंने प्रकट होकर मंत्र दिया, ज्ञान दिया। वही मंत्र और वही ज्ञान हम लोगों को आज भी प्राप्त है। सतगुरु ने हम लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए त्याग किया, तप किया, आसक्तियां त्यागी। तो हमें भी कुछ न कुछ ये सोचना चाहिए कि हमारी आसक्ति भौतिक वस्तुओं के प्रति न होकर इनकी जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार इनका उपयोग करें। कमाने के संदर्भ में कोई भी किसी को कम कमाने के लिए नहीं बोलता है, ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहिए, किंतु मात्र कमाना ही हमारा जीवन है ये नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन का ध्येय
इसी जीवन में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन प्राप्त करना है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अनुभव प्राप्त करना है और उनके साथ प्रेम करते हुए वो हमेशा हमारे साथ में हैं, हमारे हृदय में बैठे हैं, इस प्रकार का भाव रखते हुए जीवन यापन करना है। यदि ऐसा भाव रखते हैं तो कभी भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से हमारी दूरी नहीं होगी। हम चितवनी करते हैं, ध्यान करते हैं, इन सब का ध्येय यही है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हमारे साथ में हैं। अभी ये विचार कीजिए, वो हमारे बीच में यहाँ हाजिर हो जाएं तो दर्शन दें, तो क्या हम उनको छोड़ करके दूसरे तरफ मन दौड़ाएंगे? नहीं दौड़ाएंगे ना। तो बस इस प्रकार उनके प्रति ही हमारा ध्यान रखें। हम कुछ भी करें, पानी पीते हैं तो उनको अर्पण करके प्रसाद के रूप में लें, कुछ भी हम खाते हैं तो उनको अर्पण करके प्रसाद के रूप में लें। तो इस प्रकार करते हैं तो हमें बड़ा आनंद आएगा। हम कुछ कार्य करते हैं तो उनको पूछ करके कर रहे हैं, तो उनको बता करके कर रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, तो हमारे लिए उपयुक्त नहीं होगा तो आप हमारे मन को बदल दीजिएगा। हमारे लिए उपयोगी होगा तो ये सरल बने, उसके लिए आप शक्ति दे दीजिए। इस तरह से प्रार्थना करके हम कार्य करें। सभी सुंदर साथ के अंदर उनकी ही शक्ति है, उनकी ही चेतना है, उनकी ही आत्मा है, सब लोग उनके ही अंग हैं। इसलिए सब सुंदर साथ के प्रति प्रेम भाव रखें, उनकी भलाई की कामना करें। इस प्रकार का भाव हम लोगों को रखना बहुत जरूरी है। तो ऐसा भाव रखते हैं तो बड़ा आनंद आएगा। हम जीवन को बहुत ही सुंदर तरीके से संपन्न करेंगे। आज बड़े ही पवित्र दिवस पर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम स्वास्थ्य को भी ठीक रखें। ये स्वास्थ्य, शरीर के स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ। इसके लिए हमें खाने पीने की चीज़ें क्या खानी चाहिए, क्या पीनी चाहिए, इस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब कुछ समय तो हम सत्संग सत्र में प्रणामी टीवी के माध्यम से इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जो भी सामान्य रूप से हम लोग कर सकते हैं, तो उसमें क्या क्या कर सकते हैं, किस प्रकार का हमारा खान पान होना चाहिए, किस प्रकार का हमारा रहन सहन होना चाहिए, तो ये बात करेंगे। इससे शरीर स्वस्थ रहेगा। मन कैसे स्वस्थ होगा उसकी भी बात करेंगे। अंतःकरण को स्वस्थ रखने की। बुद्धि कैसे स्वस्थ रहेगी तो उसकी भी बात करेंगे। बुद्धि भी अंतःकरण का ही अंग है। अब इसको चित्त शुद्धि भी कह सकते हैं। तो इससे हमारे भाव पवित्र हो जाते हैं। चित्त शुद्धि हो जाती है ना, तो हमारा भाव पवित्र हो जाते हैं। तो उसके बाद हमें स्वयं का अनुभव होगा कि मैं आत्मा हूँ, तो ये शरीर मेरा है। तब हम बड़े आनंद से, जैसे हम गाड़ी में बैठ कर के यात्रा करने जा रहे हैं, तो आनंद से जाते हैं तो हमारी यात्रा बड़ी अच्छी रहती है। गाड़ी भी ठीक ठाक हो तो यात्रा अच्छी रहेगी। गाड़ी में अलग अलग प्रकार के पार्ट्स पुर्जे वगैरह लगे हुए हैं, तो उन सब को ठीक रखना आवश्यक होता है। तो इसी प्रकार ये वाहन है, ये गाड़ी है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने हमारे लिए भिजवाई है। तो इसको हम ठीक ठाक रखें और इसको स्वस्थ रख करके हम स्वयं को पहचान लें और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ हमारा संबंध है, इस बात को सुनिश्चित कर लें। तो हमारा प्रेम उनके प्रति सदैव जागृत रहेगा। हम उनके बिना रह ही नहीं पाएंगे। उनका स्मरण निरंतर बना रहेगा।
तो इस प्रकार का स्मरण हमारा बना रहे, तो इसके लिए ही हम लोगों को प्रयत्न करना चाहिए। तो हमारा जीवन का ध्येय तो इस जीवन में रहते हुए, इस जीवन में ही जीते जी ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अनुभव करें। जैसे ही शरीर छोड़ने का समय आएगा, उस समय हम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में जागृत हो जाए। ऐसा लक्ष्य रख करके आगे बढ़े। तो आप सभी आज इस पवित्र दिन पर यहाँ पर पधारे हैं, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज्य की अपार कृपा आप सभी को प्राप्त हो, ऐसी शुभकामना। अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं ना, तो ये कार्यक्रम भी पूरी दुनिया में पहुँचेगा। इसके लिए मैंने हिंदी में बताया, क्योंकि हिंदी में बोलते हैं तो सब लोग समझ लेते हैं। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिंदी में बोलते हैं तो पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं भारत से जुड़े हुए, सब हिंदी समझ लेते हैं। यदि वो गुजराती में ही बोलते हैं तो फिर पूरे देश को संबोधित नहीं कर सकते ना। इसलिए हम लोगों को भी कई बार हिंदी में बोलने की आवश्यकता पड़ती है। यदि यहाँ गुजराती न समझने वाले लोग नहीं हैं, सब लोग गुजराती समझते हैं, किंतु हिंदी में बोलेंगे तो बाहर के लोगों को भी लाभ मिलेगा। तो इसके लिए हिंदी में बात की है। महामती श्री प्राणनाथ जी ने भी गुजरात से बाहर जाने के बाद में फिर हिंदी भाषा को अपनाया, और उन्होंने ये भी कहा सबके लिए सुगम है, इसलिए सब लोग इससे लाभ प्राप्त करेंगे। तो सबको लाभ मिले, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हम लोगों को कार्य करना चाहिए। तो आप सब यहाँ आए हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देते हुए मैं मेरी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूँ। जोरदार कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, विपाच नौतनपुरी धाम की, विपाच नौतनपुरी धाम स्थापना दिन की, जगत गुरु आचार्य श्री अक्षर कृष्ण मणि जी महाराज की, समस्त सुंदर साथ की, आज का आनंद की। परम पूज्य परम वंदनीय गुरु जी के पावन चरणों में कोटान कोट प्रणाम। सभी संत जनों को प्रणाम। आप सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम। सुंदर साथ जी हम सभी को आशीर्वाद प्राप्त हुए परम पूज्य गुरु जी के मुखारविंद से। आप सभी को अब तो गुजराती में बोलूं तो वांधो नहीं आवे, तो आप सहू ने खबर छे कि આજનો જે પવિત્ર દિવસ જેનો મહિમા શું છે કે ગુરુજીએ વાત કરી। એક તો પૃથ્વી પરિક્રમા પૌરાણિક કાળથી આ દિવસનું મહત્વ, બીજો નવતનપુરી ધામની સ્થાપના આજના દિવસે, એટલે આપણા સહુ માટે તો અત્યંત ગૌરવમય દિવસ છે આજ। એટલે નવતનપુરી ધામ અને સમગ્ર પ્રણામી આલમ અને બહાર બધા જ ભક્ત સમુદાય આજના દિવસ માટે ખૂબ ઉત્સાહિત રહેતા હોય છે અને અલગ અલગ સ્થાનોમાં પગપાળા કરીને આખો દિવસ, કેટલાક તો આખો દિવસનો કાર્યક્રમ રાખતા હોય સવારથી સાંજ સુધી। તો આપણે પણ નવતનપુરી ધામમાં 12,000 પારાયણ થયા પછી 2006માં આ પારાયણ થયા, 2007માં પ્રથમ સ્મૃતિ દિવસ મનાયા, ત્યાંથી આ નિરંતર ચાલતો આવ્યો છે, બરાબર। તો આ વર્ષે કેટલા છે? લગભગ 14મો 14 કે 15મો, 2006 નું 15 થયા હશે, પણ એમ પરિક્રમા તરીકે 14મો વર્ષ આ છે। તો આપ સૌને ખબર છે કે આજના દિવસ માટે દર વર્ષે એમ અલગ અલગ સુંદર સાથની ખૂબ સારી સેવા હોય છે।
કોઈ પણ કાર્ય હોય, નાના હોય કે મોટા હોય, જો શારીરિક રૂપથી સેવા કરવાવાળા અતિ આવશ્યક હોય, એની સાથોસાથ આર્થિક રૂપે પણ જે સુંદર સાથ સેવા કરવા માટે આગળ આવે છે એનું પણ ખૂબ મહત્વ છે. એના વગર પણ કંઈક કાર્ય સિદ્ધ થાય એમ નથી. આજના સમયમાં અર્થનું પણ મહત્વ ઘણું છે. એટલે કેટલાક સુંદર સાથ આપ બધા જોઈ રહ્યા છો સામે. કેટલાક તો શારીરિક મહેનત કરી રહ્યા છે, કાલથી તૈયારીમાં હતા. એમ તો કેટલા દિવસથી આ રસ્તા બનાવવા માટે, આ વખતે તો નવો રસ્તો ગુરુજીએ શોધી કાઢ્યો. તો આ નવા રસ્તાથી આવ્યા તો લગભગ અડધી કલાકથી 45 મિનિટ, હા લગભગ આટલું ઓછું થયું. બરોબર ને? આપ સૌને ખબર પડી ને? 1.25 કલાકમાં આપણે પહોંચ્યા. લગભગ 1.5 કલાક જેવો સમય લાગતો. તો કોઈને વધારે થાક પણ લાગી નહીં આ વખતે. બરોબર ને? શોર્ટકટ રસ્તો. તો આ બનાવવા માટે અને સાફ સુફ કરવા માટે, અને અહીં જો નાસ્તા બનાવી રહ્યા છે આ ભાઈઓ પણ કાલ પરમ દિવસથી લાગી રહ્યા છે. પર કહેવાનો મતલબ કે શારીરિક મહેનત, શરીરથી સેવા કરવા વાળાનો પણ મહત્વ ઓછો નથી, ખૂબ મહત્વ હોય છે. એવી જ રીતે આર્થિક સેવા કરવા વાળા, અને આર્થિક સેવા કરવાનું પણ રાજી જે પ્રેરિત કરે ને એ જ કરી શકે. નહીં તો હોય બેંકમાં કેટલાક પૈડા હોય, ઇન્કમ ટેક્સ વાળા છાપા મારીને લઈ જતા હોય, પણ નીકળતું નથી ખિસ્સામાંથી ને બેંકથી નીકળતા નથી. બરોબર ને? ધર્મદામાં આવે નહીં. તો અને કેટલાક એવા સુંદર સાથ છે, બહુ વધારે સમૃદ્ધ હોય નહીં, ઠીક હોય, પણ ધર્મમાં ખર્ચ કર્યા જ કરે. જે કુવામાં પાણી આવતું જાય ને પછી એમાંથી કાઢતા જાય ને પછી નવું પાણી આવતું જાય. બરોબર? તો એવી રીતે કેટલાક સુંદર સાથ આર્થિક સેવા કરતા હોય છે. અને લગભગ મને ખબર છે 2 વર્ષથી તો આપણા રાજકોટના સુંદર સાથ નાનજીભાઈ પાદરિયા અહીં છે કે, હા મળ્યા હતા, હમણાં જ મળ્યા હતા. નાનજીભાઈ પાદરિયા જે અહીં અલ્પાહારની સેવા બધા સુંદર સાથ માટે જેમના તરફથી થાય છે, નાનજીભાઈ પાદરિયા. તો એમને તાલીઓના ગગડા સાથે વધાવજો. અને દર પૂનમે આપણા ગૌશાલામાં ગાયોને લીલા ચારા, ઘાસચારા નાખે છે. બધા ગાયોને ભરપેટ થાય એવી રીતે, હા કંઈ ઓછું નહીં, આખો દિવસ માટે ભરપેટ થાય એવી રીતે એ ચારા નાખતા હોય છે દર પૂનમે. એમની સારી એવી સેવા છે. તો બહુ બહુ ધન્યવાદ નાનજીભાઈ. એવી રીતે રાજી કૃપા કર્યા જ કરે. મારા શ્રીના આશીર્વાદ બરસતા રહે, નવતનપુરી ધામના આશીર્વાદ બરસતા રહે. તો એવી જ રીતે હવે ગોંડલના સુંદર સાથ. આપ સૌને ખબર હશે, જ્યારે આ કોરોનાનો પ્રકોપ શરૂઆતમાં જ્યારે લોકડાઉન થયેલો, તો ત્યારે શ્રી 5 નવતનપુરી ધામ પરમ પૂજ્ય મહારાજના આશીર્વાદથી કે લગભગ 45 દિવસ સુધી અલગ અલગ વિસ્તારોમાં હજારો એવા જરૂરતમંદોને સવાર સાંજની ભોજનની સેવા નવતનપુરી ધામથી થયેલી. એટલે નવતનપુરી ધામ એટલે આપ સૌ સુંદર સાથ તરફથી. બરોબર ને? કે નવતનપુરી ધામનું કોઈ બીજું સાઈડ ઇન્કમ તો છે નહીં. આપ સૌ સુંદર સાથ જેવી રીતે ભાવપૂર્વક દાન કરો છો, એમાંથી સેવા કાર્ય સંપન્ન થાય છે. તો ત્યારે લોકડાઉનના અવસરમાં પણ કેટલાક સુંદર સાથે સારી એવી સેવા કરેલી. તો જેમ જેમ એમના જોડે સંપર્ક થાય એમનો સન્માન થશે, ગુરુજી આશીર્વાદ પ્રદાન કરશે. તો આજે છે કે નહીં ગોંડલના જયંતિભાઈ પડાલિયા, હા અહીં છે, સામે જ છે. તો આપ ઊભા થાઓ. તો એમના તરફથી સારી એવી સેવા 51,000 રૂપિયાની સેવા એમના તરફથી ત્યારે પ્રાપ્ત થયેલી. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ જયંતિભાઈ. આપ આવો, આશીર્વાદ ગ્રહણ કરજો. એવી જ રીતે શ્રી રાજ શ્યામાજી આપના પર કૃપા બરસાતા રહે અને નવતનપુરી ધામ એમન ગુરુજીના આશીર્વાદથી ખૂબ ખૂબ સેવામાં હર હંમેશા આગળ આવતા જ રહેજો. એ અમે સૌ શુભકામના કરીએ. એવી જ રીતે આપણા એવા સારા એવા સેવાભાવી સુંદર સાથ જે અવેસિંગભાઈ વાડા તમે
ઓળખતા હશો, ઘણા વર્ષ સુધી નવતનપુરી ધામમાં જ્યારે મેલા મહોત્સવ હોય ને તો બુટ ઘરની સેવા કરતા હતા, બરાબર. તો એમના દીકરા છે, એમના પણ એ સેવા ભાવના છે કે એનું નામ છે જયુભા, જયુભા અવેસિંગ વાડા. અહીં છે જયુભા, અહીં દોડો દોડો, હવે દોડો. હા, તો આ ભાઈ ચાય પાણીની સેવા જે શરૂઆત 2007માં પ્રથમ યાત્રા અહીં આવેલી, તો ત્યારે આ ખેતર એ બાવતા હતા, બરોબર. તો ત્યારે એમની ભાવના થઈ કે ચાય પાણીની સેવા તો અમે જ ઉપાડી લઈએ, આ અવસર ક્યાંથી મળશે ફરી. તો ત્યારથી હવે દર વર્ષે એ જ ચાય પાણીની સેવાનો એક મોટો લાભ એ લઈ રહે છે કે જો સુંદર સાથ એ બહુ વધારે આર્થિક સંપન્નતા નથી, આપમાં જે સંપન્નતા છે હશે એમના આપના કરતા ઓછી સંપન્નતા હશે, પણ દિલ મોટો છે એમ, બરાબર. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ જયુભા. જયુભા ને, અચ્છા, જયુભા અવેસિંગ વારા, એમ મૂળ કાનાલુસ ને પીપર, લાલપુર તાલુકા પીપરના છે. સારા એવા સેવા આવી સુંદર સાથ છે. તો આપ સૌ સુંદર સાથને બહુ બહુ ધન્યવાદ. હવે આપણે અલ્પાહાર બાજુ પ્રસ્થાન કરીએ અને અહીંથી નવતનપુરી ધામ જઈશું. ત્યાં બધા માટે ભોજનની સેવા તૈયાર છે, ભોજન તૈયાર છે. ભોજન લઈને જ પોતપોતાના ગૃહે પ્રસ્થાન કરીશું. તો સુંદર શાહજી, આજની રસોઈની સેવા મારા ખ્યાલ મુજબ કોઈ સુંદર સાથની નથી, નવતનપુરી ધામ તરફથી જ છે, એ પણ આપ સૌ તરફથી જ છે એમ માનવામાં આવે છે. બહુ બહુ ધન્યવાદ. હા, કોઈને મારે એકલાની સેવા લેવાની છે એ ગણતરી હોય તો ના નહીં પાડીએ, એમાં કોઈને ના નથી, બરોબર. વાહ, થઈ ગઈ. બોલો કૃષ્ણ કન્હૈયા લાલ કી. તો કૃષ્ણ પ્રણામી મહિલા મંડળ ઈવા કે યુવા, ઈવા પાર્ક, યુવા પાર્ક. તો રસોઈની સેવા પણ આવી ગઈ. શ્રી કૃષ્ણ પ્રણામી મહિલા મંડળ ઈવા પાર્ક તરફથી તાલીઓના ગડગડાટ સાથે એમને બનાવો. બહુ બહુ ધન્યવાદ કૃષ્ણાબેન અને આ બધા સદસ્યોને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તો ચાલીએ હવે અલ્પાહાર બાજુ બધા પ્રસ્થાન કરશું, પછી આપણે બોલો કૃષ્ણ કન્હૈયા લાલ કી. जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहीं